हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ना, बहुत क्विक मेकअप होने वाला। आई मीन द क्विकेस्ट मेकअप आई कैन एवर डू। रीज़न बीइंग कि आई हैव टू गो समवेयर एंड आई ओनली गॉट 7 or 10 minutes टू गेट रेडी, और मुझे उन्हीं 10 minutes में रेडी होना है। एंड यू गाइज नो द वर्स्ट थिंग इज़ कि मेरे फ़ोन में बैटरी भी बिल्कुल नहीं है। सो बट मेरा वीडियो बनाने का बहुत मन था, सो बट आई कैन नॉट चार्ज माई फ़ोन। सो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली मुझे मेकअप करने से पहले कि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सबसे पहले आई एम गोना अप्लाई द मॉइस्चराइजर। नेक्स्ट आई एम गोना अप्लाई द प्राइमर। Since this is going to be a day out, I'm going during the day, but still I'm gonna apply the illuminating cream, जो कि मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में अप्लाई करूँगी, because I cannot step out without the illuminating cream, as I love applying it. एंड आई रियली डोंट नो कि मॉर्निंग में मुझे पिंपल कहाँ से निकल गया अचानक से। आई मीन ऑब्वियसली इट इज़ विद एवरी गर्ल। आई मीन व्हेनेवर वी हैव टू गो आउट, आई मीन वी ऑलवेज फेस सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसीलर, बिकॉज मैं यहाँ पे करेक्टर कोई यूज़ नहीं कर रही हूँ, बिकॉज इट्स द फुल कवरेज कंसीलर, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। सो डायरेक्टली गोना अप्लाई द कंसीलर ऑन द पिगमेंटेड एरियाज और माई डार्क स्पॉट्स। वन थिंग इज़ कि अगर आपका कंसीलर फुल कवरेज है ना, जैसे लॉरियल इनफैलिबल का कंसीलर मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ फुल कवरेज। आई मीन इट इज़ अ ड्यूप ऑफ टार्ट शेप टेप, आपने बहुत जगह देखा होगा। तो अगर आपका कंसीलर बहुत फुल कवरेज है, हाई एंड आपने कंसीलर ले रखा है, तो उस केस में क्या होता है कि फाउंडेशन वगैरह आप स्किप कर सकते हो, उसमें आपका रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज उससे फुल फेस अगर आपका कंसीलर से कवर हो रहा है तो आई थिंक बहुत सारे इट एक्चुअली सेव्स योर टाइम। So next step is gonna be the blusher. I'm gonna apply the blusher, and that to a liquid tint. टिंट्स का बस एक ये ड्रॉबैक होता है कि आपको बहुत क्विकली उसे ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज वो पैचेस छोड़ देता है स्किन पे। So that's the only thing we have to keep in mind. Now I'm gonna set my under eyes. इस पे एक्चुअली कॉम्पैक्ट पाउडर जब आप पूरे फेस पे अप्लाई करते हो ना, सो इट एक्चुअली मेक्स योर मेकअप ट्रांसफर प्रूफ, लॉन्ग लास्टिंग बनाता है आपके मेकअप को। बट मेक श्योर कि ड्राई स्किन वाले जो है ना, वो इस कॉम्पैक्ट पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं, बट या तो बहुत ही कम क्वांटिटी में अप्लाई कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर ऑल्सो गोना अप्लाई द लूज पाउडर, बट बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी में। अगेन ऑब्वियसली हमें कोई भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में अप्लाई नहीं करना है। सो मैं पाउडर पफ पे मैं बहुत ही मिनिमम सा पाउडर ले रही हूँ, एंड देन आई एम गोना सेट इट विद like this. Bronzer or from Hoola. See how it quickly defines the shape of the nose. Now I'm going to apply the liquid highlighter. This is the liquid highlighter or illuminator from Swiss Beauty. Let's just see. बहुत ही कम drops हम लगाएंगे and gonna blend it with the beauty blender. I hope it blends well. And yes, it blends well. Yeah. Drops here as well. First I'm gonna take this shade
I'm gonna apply all over my lid in the circular motion. Next, I'm gonna apply the brown eyeliner. So here I'm done with the eyeliner also. Next, I'm gonna apply the lip liner. Yes, which is my favorite. और ये sharp नहीं है. Back with the sharp lip liner and gonna apply this. This is the most hydrating tint or liquid lipstick. I mean, ये ना actual में बहुत बहुत hydrating है. If you guys also wanna try. So guys, ये था पूरा वीडियो which is basically a no makeup look. I mean 10 minutes में it is like we actually achieved a no makeup look. I hope you guys really liked this video, and if you really liked it, do subscribe my channel and hit the like button on this YouTube video. And मिलते हैं हमारी next video में. Till then, bye bye.